Beta 13th one, finding integral of cos 2x minus cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha. So as we can see in the denominator we have x alpha, here we have 2x 2 alpha. So half angle formula has to help us here anyhow. Okay, now because we have cos here, तो हम cos का यहाँ पे half angle cos वाला ही use करेंगे. There are three formulas for cos now. We'll use the one in which we have cos and then automatically it will follow like here. That was the expression. So cos 2x can be written as 2 cos square x minus 1. Likewise cos 2 alpha would be 2 cos square alpha minus 1 by half angle formula. Denominator में cos था इसलिए हमने cos वाला choose किया. Okay. Opening this bracket आपका -1 minus minus +1 will get cancelled. From the remaining 2 cos square alpha minus 2 cos square alpha, we can take 2 common. So we are left with, this is now a square minus b square form. Factorizing a minus b, a plus b. So a minus b is getting cancelled in numerator denominator. The function is reducing only to integration of cos x, which is sin x, and integration cos alpha is a constant out here. Okay, तो जिसमें x नहीं होगा वो सब constant होगा. So ये 2 cos alpha constant as it is, and it is actually integration of 1, which is x plus c. That's your answer. Okay. Now in the 14th one, children, you were given cos x minus sin x upon 1 plus sin 2x. Okay, so इसमें भी हम derivative introduce करते हैं. How? Little bit you'll have to remember this kind of expression. Your denominator 1 by identity can be written as cos square x plus sin square x. And half angle formula sin 2x is 2 sin x cos x. अगर यहाँ half angles हैं तो यहाँ भी हम half angle डालेंगे, right? So sin 2x is 2 sin x cos x, and ये जो 1 था इसको हम लिख सकते हैं cos square x plus sin square x by identity. So this is a square plus b square plus 2ab, which is a plus b whole square. So ये पूरा denominator जो आपका था, this is actually becoming cos x plus sin x whole square. Now if you see what we have in numerator, what we had in numerator is derivative of what we have now got in denominator. Okay, so putting this as t, if you put cos x plus sin x as t, derivative of cos x is minus sin x, of this is plus cos x, तो ये exactly same आ गया आपका derivative. Okay, so in the next step this becomes dt and this becomes upon t square. Integrating t to the power of minus 2 हो जाएगा, which is n plus 1 से t to the power of minus 1. So 1 upon t and minus 1 also in front. So putting back value of t, that's your integral. Minus of 1 upon cos x plus sin x plus c. Okay, so that was the 14th one. Now 15th I had already given you the hint. 16th, children, for the 16th one, this is integration of tan x square is a square, but that would not help us because tan square x को अगर आप वो भी लिखोगे तो फिर tan square x उसका फिर whole square you'll have to open. So another trick you have to apply in this particular one, that is we are splitting this as tan square x into tan square x. Now what has that done further for us is this tan square x will replace by its identity sec square x minus 1. Okay, why? Because अब ये अगर tan अंदर जाता है तो tan का derivative हो गया sec square x का. So we have a function and its derivative. So we can solve this by substitution. Okay, so the other function, that is your tan square x, ये identity से replace हो जाएगा as again sec square x minus 1. तो ये भी integrable है, ये भी integrable है, and ये by substitution ये भी integrable form आ गई. Okay, so this trick you have to remember, children. Tan fourth पावर जब थी उसे split कर लो as tan square x, tan square x. एक tan square x को आप identity से replace करोगे sec square x minus 1. Then distributing inside, this one is taking your form of substitution because you have a function and its derivative, and the other one can be replaced by identity and it's straight away it is coming in integrable form. So integration of tan t square becomes t cube upon 3. So 1 by 3, t's value was tan x. So this becomes tan x cube. And here this we know direct is tan x, and derivative of constant is 1. Of constant is x. Okay. So that was your 16th one. Now 17th one is simple enough, children, out here. You can just do it by separating the denominator. 17th one. Okay. Here you have. So separate the denominator. This will become sin square cancel हो जाएगा, एक sin x बच रहा है upon cos x or cos square x. So sin upon cos you'll write as tan and 1 upon cos you'll write as sec. तो ये पूरा आ गया आपका sec x tan x sec x, whichever way you say it. उसका सीधे इंटीग्रल होता है. Okay,
that is sec of x. Okay, then the other way around, likewise here आपका square cancel हो जाएगा, तो cos upon sin you can write as cot and 1 upon sin you can write as cosec. That will become minus of cosec. Okay, plus c of course. So ये easily हो जा रहे हैं. Okay, 18th I think I had already given you the hint. पूरा solution I had done there. Now 19th one, children. Now in this what are we going to do is, we've done earlier this kind of question when we tried कि हमारे पास tan का पूरा फंक्शन हो और sec स्क्वायर आ जाए. ओके, तो यहाँ आपको दिख रहा है cos का क्यूब है, तो उससे एक अगर आप cos स्क्वायर ऊपर ले जाते हो तो sec स्क्वायर आ जाएगा, तो बाकी फंक्शन tan का होना चाहिए. सो आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस साइन टू अ tan फंक्शन हियर. ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव डन, डिवाइडिंग दिस साइन अपॉन cos x. तो यहाँ पे cos से आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो 3 पास ऑलरेडी थी, एक cos और आ जाएगा, दिस विल बिकम cos x to the power of 4. Did you get that? Okay, multiplying by cos x as well as dividing by cos x. फिर ये cos x यहाँ adjust कर दिया, so that sin x upon cos x can be written as tan of x here. Okay, and then this I've separated sec square x dx क्योंकि वो डेरिवेटिव में यूज होगा. बाकी जो एक और sec square x बचा है उसको आप आइडेंटिटी से tan में कन्वर्ट कर लोगे, so that we get entire function of tan here and its derivative. That is what we have to aim for applying substitution method. Okay, एक function का expression and उसका derivative. So this is how we have changed the form, the given form. Okay, introducing tan there. Clear? This cos 4th ऊपर sec 4 था जिसमें से हमने split कर दिया है sec square which has been written as 1 plus tan square x. Another sec left as it is because now we will do this substitution. Now if you put tan x is equal to t, then sec square x dx would be replaced by dt. So this whole function will become 1 upon t plus, ये तो separating the denominator आ गया, 1 upon t plus tan x and the sec square x dx has been replaced by dt. Okay, now both of them are integrable. This is log form, so log of t आएगा, t was tan x, so log tan x from here, integral of 1 upon t and integral of t, that would be t square upon 2, so half of tan square x plus c. That's your answer. Okay, fine. Now that is 19th. Then comes your 20th one. भी simple है बेटा, देखो ऐसे ही समझ में आ रहा है. आपके पास है डिनोमिनेटर में cos x plus sin x, हाफ एंगल्स हैं एंड ये 2x है, तो आप हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे. अभी sin एंड cos दोनों थे, तो आप कौन सा हाफ एंगल लगाओगे, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x. ओके, एंड cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x. एंड नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा. सो यूल हैव cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस sin x. सो आपका cos x प्लस sin x कैंसिल हो जा रहा है. यू विल बी लेफ्ट विद ओनली cos x माइनस sin x. डेरिवेटिव ऑफ cos x इज sin minus sin x. So not derivative, integral we are doing. Integral of cos x would be sin x and derivative of minus sin x would become minus of cos x, so it will become sin x plus cos x plus c. Okay, तो ये orally ऐसे हो जा रहे हैं. Okay, now this one is also simple enough here children. 21st you can observe, you had sin inverse of cos x. तो हमें पता है हम sin and cos में pi by 2 के डिफरेंस से कन्वर्ट कर सकते हैं, and in inverse trigonometric function we've studied sin inverse and sin balance out each other. So I've converted this cos x as sin of pi by 2 minus x. We know this is equivalent. So sin and sin will cancel out. You are only left with pi by 2 minus x. So integrating this is equivalent to integrating. This is a constant pi by 2. So integral of 1 would become x. So pi by 2 x आ जाएगा. X का integral आ जाएगा x square upon 2 plus c. That's your answer. Okay. So some of them are quite simple. Orally आप carefully observe करो तो you'll get it. Now this kind of functions are important because इसमें आपका थोड़ा बहुत learning है required. Okay, you need to understand हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, and that is a special trick. Only then this is solvable. Okay, so what is that special trick is here 19, that is okay. This is integration of dx upon, this was given to you. अब हम इसमें यूज करते हैं चिल्ड्रन अपना sin of a plus minus b और मे बी cos of a plus minus b, डिपेंडिंग अपॉन आपका यहाँ पे क्या फंक्शन है. यू विल हैव टू चूज कि मैं ऊपर sin का फंक्शन बनाऊं या मैं cos का बनाऊं, जिससे कि मेरा ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए.
ओके, सो हियर यू हैव इन डिनोमिनेटर कॉस एंड कॉस, तो ऊपर मेरे पास साइन एंड कॉस के टर्म्स आने चाहिए ताकि एटलीस्ट एक कॉस कैंसिल हो जाए और बाकी साइन अपॉन कॉस मेरा टैन बन जाए. ओके, अगर यहाँ साइन और कॉस होता, एक साइन एक कॉस होता, तो आप ऊपर कॉस का बनाते, बिकॉज रिमेंबर साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी. ओके, तो जब आपके पास दोनों कॉस के हैं तो आपको ऊपर एक साइन चाहिए एक कॉस चाहिए ताकि एक फैक्टर कैंसिल हो जाए एंड एक आपका रेशियो बन जाए. ओके, एंड अगर एक साइन एक कॉस होता तो फिर आप कॉस का फॉर्मूला लेते. वाई? बिकॉज कॉस के फॉर्मूले में आता है कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस या माइनस प्लस रादर साइन ए साइन बी. ओके, तो उसमें आपका फिर क्या होता है, अगर एक कॉस एक साइन होता तो मे बी साइन साइन या कॉस कॉस कैंसिल होके एक साइन कॉस कॉट या टैन बनता. Okay, when you see this solution you'll follow it better. Maybe there is a solved example also, otherwise in the reference you'll definitely find some more examples of this kind, so you better see that and try to understand. Okay, so what in nutshell we have to understand here is we need to use our trigonometric identity sine of a plus minus b or maybe cos of a plus minus b depending upon what you have in denominator here. Okay, so see that here what I have done is I have multiplied and divided this function by sine of a minus b. तो sine of a minus b, अब इसमें तो x है नहीं तो ये हमारा constant scalar हो जाएगा. This I have kept outside the integration sign. फिर यहाँ था sine of a minus b, बैलेंस के लिए दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुए हैं. Now we are doing plus x minus x, again that's a balance here. Okay, now what have you got? x minus b, one of the angle given here, x minus b. तो ये बन गया x माइनस बी. फिर इन दोनों से आप माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो x माइनस ए, दूसरा एंगल आ जाएगा. ओके, सो रीअरेंजिंग वी हैव रिटन दिस एज साइन ऑफ x माइनस बी एंड माइनस ब्रैकेट x माइनस ए. तो हमारे दोनों एंगल्स आ गए जो डिनोमिनेटर में गिवन थे. अब नाउ वी विल एक्सपैंड दिस बाय साइन ऑफ a माइनस बी फॉर्मूला विच इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. Okay, what are we observing now? If I separate the denominator, यहाँ पे cos x minus a cancel हो जा रहा है and यहाँ sin upon cos of the same angle will make it tan of x minus b. Likewise here your cos of x minus b is getting cancelled and sin upon cos will become tan of x minus a. अब ये इसका हमें रिजल्ट ऑलरेडी पता है. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ tan इज log sec x होता है या माइनस log cos x होता है. एनी फॉर्मूला यू कैन यूज. आई हैव यूज्ड माइनस log cos x, आप इसको log sec x करके भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ओके, सो दिस स्केलर हैज टू कंटिन्यू एंड इंटीग्रल ऑफ tan थीटा इज माइनस log cos थीटा. लाइकवाइज दिस माइनस माइनस साइड मेड दिस पॉजिटिव log cos दिस. नाउ log की प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज log ऑफ a अपॉन b. सो बाय दैट इसको हम मर्ज कर देंगे log ऑफ cos of x minus a upon cos of x minus b and this minus of sine, okay minus तो हमने यहाँ कर दिया and this 1 upon sine a minus b scalar will continue. So that would be your answer for the 22nd one. Okay, so ये ट्रिक समझनी है बस आपने कि ये हम क्यों कर रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, क्योंकि फिर हमारे ये प्रोडक्ट फॉर्म थी, डिनोमिनेटर में था, उसका इंटीग्रल हमें करना नहीं आता है. We just know कुछ standard functions. So we, by the use of this whole technique and formula, we have brought it in the form for which we already know the result. Okay. Now then rest are your these some multiple choice questions here which are simple enough. This is your sine square x minus cos square x upon sine square x. Separating the denominator easily. यहाँ sin square x cancel हो जाएगा. 1 upon cos square becomes sec square. Sec का है tan x. फिर यहाँ cos and cos cancel हो जाएगा. 1 upon sin cosec and minus cosec square x का होता है plus cot x. तो ये इसका रिजल्ट आ गया सीधे सीधे. Okay. For the next one, here this we have to find. Now ये yesterday also when I was discussing I had told you कि function of function के लिए कोई रूल नहीं है. तो कभी भी आपको function के अंदर कोई function दिखे तो आपको उसमें substitution करना होता है. तो यहाँ cos के अंदर ये पूरा आ रहा है e to the power of x x. This if you take as t, which we'll have to take, तभी ये simple function बनेगा. If you take this as t, then इसका derivative क्या आएगा? By product rule, e to the power of x into 1 plus e to the power of x into x. So e to the power of x can be taken common. So ये जो numerator में given है ये इस पूरे का derivative है. So we can easily do this by putting this as t. This will become t. This whole will become dt.
सो इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये कॉस ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर टी डी टी बन गया, एंड सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है, इंटीग्रल सॉरी पता है, इज tan. So this would be your answer, tan of this expression, x e to the power of x. Okay, so बाकी सिंपल है.